Hello. Welcome, ma'am. How are you? I am doing very good, Gagan. Thank you for asking. How have you been? I'm also very good, and Okay. I would like to welcome everyone here in this Skillful Saturday, an initiative by Bluue Pin. Bluue Pin is an e-learning platform where you can learn different types of life skills and professional skills at different styles of learning and choice. So, welcome you all. Skillful Saturday is an initiative where we speak with different experts of different fields and would like to understand the futuristic skills which is important for us and that need to be absorbed by us and that need to be practiced by us. So today the special guest with us, Madam Preeti Khare, is with us. She is an internationally recognized, internationally certified life transformation and spiritual coach, relationship coach. She has been having a wonderful experience across the globe. She has worked in USA, Middle East, and different parts of the country of Middle East. She is MBA HR and president of WICCI MP chapter, and she is also NLP expert, spiritual coaching expert, and law of attraction expert. So, with kind hearts, I would like to welcome from the team of Bluue Pin. Hello, ma'am. Hello, Gagan. I'm so glad that I'm here talking with you today this Saturday. थैंक यू सो मच मैम. आज का जो टॉपिक है दैट इज यूज ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन रिलेशनशिप. जब भी रिलेशनशिप की बात आती है तो ऐसा लगता है कि ये हम में से ही और हमारे अंदर की कोई चीज है और इसको हम बहुत ही लाइटली लेते हैं. अगर हम आम जीवन में देखें इसके पीछे की साइंस को हम समझते नहीं है और उसी चीज को आज हमें समझना है कि कैसे हम इमोशनल अपने इमोशंस को कंट्रोल करके उसमें एक मास्टरी लाके हम अपने संबंधों को, चाहे वो संबंध भगवान से हो, चाहे वो हमारे परिवार के लोगों से हो, चाहे वो हमारे बच्चों से हो, चाहे हमारे ऑफिस के स्टाफ से हो, हमारे कुलीग से हो, तो ये सारी जगह में संबंधों का जो इम्पोर्टेंस है, रिलेशनशिप का जो इम्पोर्टेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और उसमें ये इमोशनल इंटेलिजेंस किस तरीके से हेल्प करती है. तो मैम सबसे पहले आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं. आपकी जर्नी के बारे में मैं जानना चाहूंगा कि कैसे आप ये थोड़ी सी अनकन्वेंशनल फील्ड मानी जाती है और कैसे आप इस तरफ टर्न हुई और आज जिस मुकाम पे आप पहुंच गई है वो काबिले तारीफ है. सबके लिए एक इंस्पायरिंग स्टोरी है, तो वो स्टोरी मैं सुनना चाहता हूँ. Absolutely, Gagan. I would be more than happy to tell you the journey that I have been through. So, as आपने बहुत सारे expert ऐसा so I'm grateful for the generous introduction from you. But what I would like to tell you about the journey is that I think हर एक की लाइफ में एक कोई ना कोई ऐसा पॉइंट आता है जरूर, right? When you start to begin to think about not just what you have to do with your own life, but really in a bigger sense, looking at the bigger picture, what is the purpose of your life? What is the vision that you're living for, right? तो मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही हुआ. गगन ने अपनी पढ़ाई यहाँ पर MBA तक इंडिया में करी और उसके बाद फिर मैं US चली गई और 15 साल तक I stayed put in the USA and for some time in Dubai, and then I was working in the States. I did my MS in United States from Central Michigan, but pretty much my area was HR, right? Human resources. और उसके बाद 2017 में जब मैं 15 साल के बाद वापस आई तो हमेशा से कुछ इंटरेस्ट पर्सनल डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा था. हमेशा I used to read lot of books that were related into the personal mastery, personal development and all of that. तो वो इंटरेस्ट कहीं ना कहीं था, लेकिन ये कभी नहीं पता था कि आगे लाइफ में क्या करना है. तो HR दिखता था कुछ टाइम तक. बट व्हेन आई रिटर्न्ड इन 2017 there was my own, you can call it cultural shock after a long time, you can call it lot of transition that it happened. बहुत सालों के बाद I came back to India and especially to a place like Bhopal, where for HR the avenues were very less,
राइट। एचआर को ज्यादातर एक 2 tier सिटी में एचआर की तरीके से नहीं समझते हैं, एडमिन ज्यादा होता है वो, until unless you get really lucky to get into one of the very very big organizations and which इतना नेटवर्किंग होनी चाहिए उस सब के लिए, बहुत सारी चीजें हैं, राइट। तो देन व्हेन आई केम एंड आई रियली वर्कड एज एन एडवाइजर्स रोल फॉर couple of months in companies in Bhopal, but began to understand for my own self that शायद एचआर मुझे खुश रख सकता है थोड़े समय के लिए, in this area, but it is not something that rest of my life I would like to do, राइट। एंड तब ये जो खुद हम अपने आप से सवाल करने लग जाते हैं जब कि व्हाट इज दैट वी रियली वांट टू डू इन लाइफ, तो मुझे जवाब हमेशा मिला कि शायद एचआर इज नॉट द प्लेस दैट आई वुड बी वेरी हैप्पी। नाउ व्हाट विल मेक मी हैप्पी वाज अ क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन मैं हर दिन ऑफिस से आने के बाद अपने आप को पूछती थी कि मैं जा रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, मुझे वहां ठीक लगता है, बट क्या मैं आके आई फील सेटिस्फाइड, आई कंटेंटेड, मे बी नॉट, देन व्हाट इज दैट आई एम लुकिंग फॉर। तो उस टाइम पे then I stepped back and quit the job of an advisor in a company and then sat back with myself for about a month and a half, right? And when I sat back with myself, all these profound questions that were coming to me कि क्या करना चाहती हूँ, क्या बड़ा पर्पस देख रही हूँ, क्यों, क्या सेटिस्फैक्शन चाहिए मुझे लाइफ में, देन आई न्यू अबाउट कोचिंग फ्रॉम द यूएस डेज, बिकॉज यूएस वेस्टर्न वर्ल्ड में या फिर मिडिल ईस्ट में कोचिंग इज वेरी पॉपुलर इन ऑर्गेनाइजेशंस एंड ऑल्सो पर्सनल कोचिंग, राइट। बट इंडिया में अभी भी ऐसा है कि अगर आप स्पेशली व्हेन यू टॉक अबाउट अ रिलेशनशिप कोच, राइट, लाइक माई सेल्फ, हाउ मेनी पीपल विल बी ओपन व्हेन यू टेल देम कि रिलेशनशिप कोच है, उनके पास अगर आपके कोई इशू है या कोई गोल है तो आप उनके पास जाइए। People will be closed, they don't want to talk about their personal life stories and all of that, right? There's always a taboo attached to that, and that's what, when I came to India and wanted to change the field and really was hunting for what is meant for me, उस टाइम पे मुझे लगा कि coaching is something which is not very popular in India, but I see lot of sense in coaching, right? Coaching में it is about the personal discovery, it's about personal exploration, utilizing the potential. So I found this space very very interesting, and I also thought कि ये एक ऐसी जगह है शायद जिसमें मैं one on one basis पे या organization में one to many basis पे, group coachings and all of that, I can make a larger impact on the society. And that's how then I got into the coaching certification. I did my coaching certification from ICF, which is the highest coaching in a body in the coaching industry, which is called International Coach Federation. वहां से मैंने अपना पूरा training करी, and then finally now I'm a solopreneur, and I pretty much, जैसे कि आपने कहा कि विक्की के साथ एसोसिएटेड हूँ, तो मैंने जब कोचिंग अपनी जर्नी खत्म करी, then as I told you, I wanted to create a bigger impact, right? Not like I wanted to reach to as many people and tell them what coaching is all about and how people can use them for their own betterment and to utilize their fullest potential, become the best versions of themselves. तो उस टाइम पे I took up this role, which is Vicky MP State में I started the coaching council here. And up MP State का जो coaching council है, I'm presiding over that. And what we are doing under Wiki, which is an NGO, which is called Women Indian Chamber of Commerce and Industry. It's a global organization. Pretty much every country has Wiki councils. यहाँ पे MP में हम लोग जो कर रहे हैं वो different colleges, different institutes, और उन सब में जाके we are trying to create the awareness of coaching first, and then trying to make coaching accessible to one and all. Wonderful journey, ma'am. It is very, very, very much inspiring. There are very few people who understand their passion, who take that much risk of leaving any job and sit with themselves and understand what is their purpose. And you have found your purpose and you are living that purpose. So, ma'am, moving ahead, the topic for today is use of emotional intelligence. तो मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि ये इमोशनल इंटेलिजेंस, ये वर्ड अभी काफी पॉपुलर है, हर जगह हम ये सुनने को मिल रहा है, ये इवन स्कूल्स में भी ये काफी ज्यादा सुनने को मिलने लगा है, तो ये है क्या? Correct, yeah, absolutely.
सो इमोशनल इंटेलिजेंस एक्चुअली बहुत पुराना वर्ड नहीं है, आपने ये बिल्कुल सही कहा गगन कि ये अभी बहुत ज्यादा सुनने में आ गया है. तो लेट मी जस्ट गो अ लिटिल बिट, आई विल नॉट गो डीप डाउन इनटू द हिस्ट्री, बट 1990 was the first time when Peter Covey and you know John Mayer, they both came together in 1990 and इन्होंने ये first time coin किया था term which was called emotional intelligence. And what they meant by emotional intelligence was understanding your emotions, understanding others' emotions, and really learning how to manage and bridge the gap. And then also learning to use this skill, to manage the relationships. So emotional intelligence is nothing but अपने खुद के इमोशंस बहुत अच्छी तरीके से समझना, जहां समझ में आ रहा है यू बिकम अवेयर, label them, move ahead, reconcile with that emotion, understand people's emotions, which is very, very important, whether it is a professional setting or a personal setting, right? And that is why it becomes very important then in relationships, because जब आप अपने emotions अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, तभी आप दूसरों के इमोशंस के लिए भी उतने सेंसिटिव होंगे और आपको समझ में आएगा दूसरों के इमोशंस. एंड वंस यू लर्न टू मैनेज योर ओन इमोशंस एंड देन रिएक्ट और रिस्पॉन्ड with the understanding of that emotion, that's when it kind of becomes extremely good for a thriving relationship. So emotional intelligence, to answer your question, is pretty much understanding your and others' emotions and using this knowledge to build the relationships. I mean, is there any science behind this? जैसे हम इमोशंस की बात करते हैं और हर पल, हर सेकंड में बोलूंगा, हर लम्हे में हमारे इमोशंस बदलते रहते हैं और उसके कारण से हम सुनते हैं कि भाई आपके बॉडी में भी कुछ कुछ चेंजेस आते हैं. तो मैम इसके पीछे कोई साइंस है और कैसे हम अपने इमोशंस को समझ सकते हैं? हाउ टू अंडरस्टैंड और रिकॉग्नाइज अवर इमोशंस? राइट. सो देयर इज all of these things. अब आपने आजकल जैसे आपने इसकी बात करी इमोशनल इंटेलिजेंस की, आपने एक और टर्म काफी सुना होगा गगन, विच इज कॉल्ड न्यूरोप्लास्टिसिटी, राइट? एंड आई विल कम टू दैट व्हाट इट इज, राइट? इट इज प्रीटी मच प्रोग्रामिंग और रीवायरिंग योर न्यूरॉन्स. तो हमारा जो सारी चीजें होती हैं प्रीटी मच इस दो चीजों का खेल है, एक सबकॉन्शियस माइंड और एक लॉजिकल माइंड जो हमारा होता है, राइट? सो नाउ वॉट एवर इज आवर बिलीव, जो जिस तरीके से हम छोटे से अभी तक बड़े हुए हैं, जिस तरीके से हमारी कंडीशनिंग हुई, जिस परिवार में रहे, जिन लोगों के साथ, जो टीचर्स थे हमारे, जो मेंटोर्स थे छोटे से जिनके साथ रहे, उस एक कंडीशनिंग की वजह से हमारे सर्टेन बिलीव्स बन जाते हैं. दैट इज प्रीटी मच इन आवर सबकॉन्शियस. बट हमारा जो ब्रेन है, राइट, द कॉन्शियस माइंड of the brain, it says something different than what subconscious has to say. Subconscious में over a period of time उसकी एक प्रोग्रामिंग कर दी गई, राइट? और जो कॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस माइंड बहुत लॉजिकल होता है. उसको हम जो स्टोरी अपने आप को खुद को नरेट करते हैं बार बार, बेसिस आर कंडीशंस, बेसिस आर experiences, basis our childhood memories, basis our trauma experiences, whatever. जो बात हम अपने आप से self talk, that is why they say it's very important, right? So the self talk that you have with yourself has a lot to do with what happens with your brain. So the science that you're asking, Gagan, as I told you that it all started with the term of emotional intelligence in 1990, but in 1996 a real revolution happened, which is when Daniel Goleman, a professor and a psychologist, he really talked about or published his book, which was called Emotional Intelligence, Why It Matters More Than IQ. Was his book, which was published in 1996, which was based out of lot of research that he did. And he pretty much talked about that हर प्रोफेशनल जो हमको ऐसा लगता है प्रोफेशनली आईक्यू बहुत मैटर करता है, राइट? इंटेलिजेंस कोशेंट इज समथिंग दैट एवरीबॉडी से ओके ये इसका हाई आईक्यू है, ये बहुत अच्छा करेगा, ऑर्गेनाइजेशंस में अच्छा करेगा, पढ़ाई में अच्छा करेगा. एक्चुअली इफ यू लुक एट द रियल स्टैटिस्टिक्स, it's only 20% that really counts towards the leadership's roles. So 80% is pretty much what you can call as emotional intelligence. So people who become the leaders, so you can become a manager with your IQ, because all those skills जो IQ आपको provide करता है, which are technical skills, which is learning through the books and all of that, is
is something very different, which only counts for 20% is what statistics and the research says, and rest 80% which takes you from the manager to become a leader or a CEO or somebody who's leading the organizations, the institutes, is pretty much the emotional intelligence. And emotional intelligence is nothing but, as I said, understanding. Since you understand your own emotions and other people's emotions, you become a better team player. You understand when to do what and how to get the things done from people as well. So that's what it's all about. और उन्होंने जो आपने साइंस के बारे में पूछा, तो in his book and otherwise also emotional intelligence talks about कि जब हम लोग केव्स में रहते थे पहले और क्यों हमारा ब्रेन एक सर्टन तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, राइट? क्यों जब किसी ने कोई बात कही और हमको लगा कि जजमेंट है, या किसी ने कोई बात करा तो हमको लगा कि ब्लेम है, व्हाई डज वी ऑलवेज व्हाई डज इट हैपन दैट वी ऑलवेज थिंक दैट देयर इज एन अटैक ऑन अस, राइट? कोई भी किसी ने भी कुछ हमें छोटा सा फीडबैक भी दिया, वी कैन नॉट हैंडल दैट वेरी वेल. व्हाई? बिकॉज द वे द एवोल्यूशन हैपेंड, राइट? द केवमेन, उनके पास कोई हथियार नहीं होते थे, कुछ नहीं होते थे, तो कभी भी कोई जो ऐसा एनिमल आता था तो उसको अपने आप को बचाने के लिए उनका ब्रेन को एक ही तरीके से सोचना आता था, राइट? दैट वाज कॉल्ड अ फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स, राइट? तो हमारे ब्रेन में, गगन, एक there are different parts of the brain, and there is a part at this end of our brain and beginning of the neck. Here it is something called amygdala. And there is a term that was coined by Mr. Goldman, and it was called amygdala hijack. So amygdala hijack is what explains actually each response that we, happen because of the fear of और द थ्रेट इन एनी केस. तो क्या हुआ कि जब जैसे जिस तरीके से हमारे केव्स वगैरह में कोई एनिमल आता था तो हमारे ब्रेन को सिर्फ फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स आता था, दैट वाज बिकॉज वी हैड टू प्रोटेक्ट, survival mechanism, right? We had to protect ourselves. The man at that point in time had no other way but to protect or to run. So flight or fight, right? Flight means bhag jana and fight means either to, so that's the way the initial brain was trained. Then as the evolution slowly happened, this amygdala ke upar, there was a mammalian brain that came. And now it is even advanced when emotional intelligence is being used more, and we kind of using the prefrontal cortex, which is the logical brain of ours, we kind of can program it the way we want. We can rewire the neurons the way we want, reprogram the way we want. So that's the science. So amygdala का पहले, अगर अभी भी जिन लोगों का due to certain reasons people tend to behave still in the same way, but if they are not conscious of their emotions, if they are not aware of their emotions, what happens is same fight or flight response में जाते हैं. किसी भी एक छोटे से comment को they will take as a big threat and they want to react then, not respond. So thinking and responding is very different, right, than reacting. So that's the whole science, that the amygdala gets hijacked each time somebody says something. But by regular practices of mindfulness, of meditation, of certain things that can keep you happy, exercise, right food, you can definitely reprogram your brain and then become more emotionally intelligent. इसमें आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने एक्सप्लेन किया, बहुत डिटेल में बताई चीजें, और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि सच में जो साइंस है वो बहुत सोच समझकर बनाई गई है. और मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये जो डायलॉग हम हर जगह सुनते थे या सुनते हैं कि भावनाओं को समझो, दैट इज नथिंग बट दिस इमोशनल इंटेलिजेंस. तो ये शब्द हम लोग बहुत दिनों से यूज कर रहे हैं, लेकिन अभी इसको एक प्रॉपर नाम दिया गया है. एंड कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी लाइफ में अपने इमोशंस को ही नहीं समझ पाते, बहुत ज्यादा कंफ्यूज जाते हैं कि हम खुश हो रहे हैं, मतलब एक बार दिमाग करता है कि हम खुश हो जाएं, लेकिन अंदर से वो चीज आती नहीं है और फेस से वो चीजें झलक जाती है कि भाई आप खुश नहीं है. तो ये जो सेल्फ इमोशंस हैं उसको कैसे समझा जा सकता है? हाउ टू रिकॉग्नाइज दैट? Absolutely beautiful question, Gagan. Still there is a challenge. Still it is not possible for many of us to be able to understand what our emotions are and what we are going through. एक तो हमारी कंडीशनिंग, जैसे मैंने आपको कहा कि छोटे से कैसे होती है कि whenever there is a problem, तो
हमको हमारे इमोशंस के साथ कैसे डील करना है वो शायद सिखाया नहीं जाता। तो छोटे से जब हम छोटे होते हैं तो एनी प्रॉब्लम विच इज देयर, एक बच्चा रो रहा होता है राइट, और उसका टॉय टूट गया है, आई डोंट थिंक एनीबडी इन द फैमिली कम्स एंड सेज how are you feeling if it has broken down. I understand that it has broken down for you. How are you feeling right now? पहला हमारा जो चीज होती है उस बच्चे को रोता देख के, वो हम ये कहते हैं कि I'll buy you a new one. मैं तुम्हें दूसरा खरीदूं, क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो इतना, और इसको so what we try to do is we give solutions. We don't allow the child to express the emotion, right? कि रो रो थोड़ी देर, it's okay, you're feeling that way and I'm feeling with you. So the moment हमको ये सिखाने जाने लगेगा कि it's okay to express our emotions, we will be able to understand what emotions are, right? Number one. Number two is, आपने पूछा क्या तरीका हो सकता है, तो तरीके बहुत सारे हैं. One of the ways which I recommend to all my coaches or all my clients is, whenever you begin to experience something, हम सबको पता चलता है जब हम खुश होते हैं, we feel that within, right? Whenever we are sad, somebody says something, तो एकदम ऐसा नहीं होता कि एकदम से आप भड़क गए. आपका इमोशन, गुस्सा जो है, like anger is an emotion. Anger doesn't happen with a sudden outburst for most of us. किसी किसी के साथ होता है, but most of us it is like होने लगता है, आपको समझ में आता है, you can feel in the body, you can feel in your mind. For some people the cheeks become red and hot and warm, and some people's eyes begin to dilate, the pupil begins, all of those you can feel and sense. We have not trained ourselves, Gagan, to begin to experience these senses, right? हम लोगों ने माइंडफुल अगर होना सीख लिया कि हम थोड़ा सा माइंडफुल होके, और माइंडफुलनेस इज अ प्रैक्टिस, इट कम्स विद रेगुलर मेडिटेशंस, बिकम calming yourself down, sitting at one place, begin to feel those senses. So mindfulness is number one. Number two is journaling is also the second way which I recommend अगेन अ लॉट. तो जिस टाइम आपको जो फीलिंग हो रही है, जो इमोशंस आ रहे हैं, जो मूड चेंज हो रहा है, उसको इफ यू कैन सिट एंड राइट, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग टू मी, or even once the emotion has happened, forget about worrying about at that point in time or that moment of time. Later also if you can begin to journal that कि आज मुझे उस टाइम पे गुस्सा आया and इसका रीजन ये था, मुझे ऐसा लगा, and the moment you begin to journal, it becomes very very different experience. You will begin to recognize your emotions. At the same time, you will also become, very habituated to see that those emotions in others, right? जब हमको, क्योंकि हमको दूसरों के भी बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस, ये सारी चीजें लोग अपने वर्ड से कहीं ना कहीं, बट हमको कहीं ना कहीं लोगों की बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशन से समझ में आता है कि उनको गुस्सा आ रहा है या उनको अच्छा नहीं लग रहा. सो वी विल, वंस वी हैव बिकम to be aware of our own emotions, we will be very very sensitive to other people's emotions as well. So two techniques are these which are very very useful, that you sit in calm and sit in silence and be mindful of your emotions, be very sensitive, instead of feel that kuch ho raha hai body mein, and then calm down, take deep breath. That allows, there are endorphins in the brain, they're the chemicals, right? तो deep breathing क्या करती है, इसका बहुत ही सीधा सा साइंस है इसके भी पीछे, गगन. क्या होता है, there are, whenever there is a threat in form of words or in form of action, right? कोई भी थ्रेट आपको समझ में आई तो अगेन एज आई टोल्ड यू, फाइट और फ्लाइट का रिस्पॉन्स आता है, एमिटियला हाईजैक होता है. उस टाइम पे हमारा sympathetic nervous system gets activated, right? That's a term, sympathetic nervous system, which gets activated, जो कि again हमको react करने पे मजबूर करता है. We react to because of the survival mechanism. We want to protect ourselves. We want to protect our esteem, our worth, all of those which are being attacked, right? Now, when you deep breathe in the same moment, आपको समझ में आया, आपकी बॉडी में सेंसेशंस हुए, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, instead of reacting, can you take a pause for a minute and really be with your breath? Couple of deep breaths, what it does is it calms down your sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system gets activated, right? तो उससे क्या होता है, it calms you down further and your reaction, you can turn it into a beautiful response.
that allows you some time, and you can turn that reaction into a response which is more productive for the relationship. परफेक्ट मैम, बहुत ही आपने अच्छे तरीके से इसको बताया। मैम ये तो अपने खुद के इमोशंस को समझने के लिए तो ये जो दो टेक्निक आपने बताई है, इसमें जो जर्नलिंग वाली तो बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है। इसमें मैम होगा क्या, जैसे हमने जर्नल बना लिया, हर बार जितनी बार हमारे अंदर अलग अलग इमोशंस आ रहे हैं, हमने उसका कॉज और उस पर हमने क्या रिएक्ट किया या फिर हम कैसा महसूस कर रहे हैं वो हमने लिख लिया, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे इसमें? What is the next step? Yeah, so when you journal something, right, you begin to recognize also not just that कैसा लग रहा था, but you're also thinking about the ways that you could have handled the same situation differently. और क्योंकि आपने अगर कभी वो सीख लिया और पॉज करके differently react करा, तो आपने वो भी लिखा कि okay, I felt very angry, but I took deep breaths, I calmed down, and then I responded in a different fashion. ये जो journal बार बार आपका होगा, इस journaling से see what happens, Gagan, is by writing it gets imprinted into your brain. पहले के लोग आपने सुना होगा हमेशा कहते थे कि भाई लिख लिख के पढ़ना सीखो, अपने छोटे में सुना होगा कि उससे याद ज्यादा होता है. Why? There is a clear science. When you say something or when you think something, vis-a-vis if you write something, the imprint on the brain is stronger, right? You kind of write it, you process it, and then you the imprint is heavier on the brain. तो ये जो आप कह रहे हैं कि बार बार आपने जो अपने इमोशंस को लिखा और अपनी रिएक्शंस रिस्पॉन्सेस को लिखा, उससे it is making you even more aware. Next time when this thing happens, you can activate your parasympathetic faster now, instead of being in the state of sympathetic nervous system, activated sympathetic nervous system, आप उस वाले स्टेज पे बहुत जल्दी आओगे, बिकॉज आपने कर करके और लिख लिख के और वापस इस जर्नल को रिविजिट करके कि ओके आपने 3 महीने तक इस चीज की प्रैक्टिस करी, आपने मेडिटेशन की है, आपने माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करी और अपने इमोशंस को मैनेज करने की प्रैक्टिस करी. यू नो, ऑन एवरी ओकेजन यू टुक दीज डीप ब्रेथ्स, यू प्रोबब्ली वॉकड आउट, जब एंगर गुस्सा आ रहा है या फ्रस्ट्रेशन हो रही है, यू वॉक आउट इन नेचर, राइट? बाहर चले जाइए. तो आप यू जस्ट ट्राइंग टू डाइवर्ट योर माइंड एंड trying to come out of this threatening situation. All these things, when you revisit the journal in say about 3 months and you see where you were, what were your emotions, how much time did it take for you to process that emotion, vis-a-vis when you are comparing yourself after 3 months or after 2 months and you see, oh my goodness, how much better I have become. That also creates a very different kind of dopamine chemical in your body, which motivates you further to respond in a more productive way. एक्सेलेंट मैम। और मुझे लगता है कि जब हम अपने इमोशंस को अच्छे तरीके से समझ लेंगे, समझ जाएंगे, तो डेफिनेटली हम किसी और के लिए भी जो सामने वाले को भी जो इमोशंस आ रहे हैं अलग अलग सिचुएशन से, हम उसको भी समझ पाएंगे और हम अपने आप को उसकी जगह में रख के देख पाएंगे कि शायद हर बार हम कहते हैं कि भाई आदमी गलत नहीं होता है, परिस्थितियां गलत होती है, सिचुएशंस गलत हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई इसके थ्रू अगर हम अपने इमोशंस को पहचानने लग जाएंगे तो हम दूसरों के इमोशंस को भी बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे और उसके बाद में नेचुरल सी बात है, अगर ये चीजें अच्छी हो गई तो रिलेशनशिप भी अच्छी हो ही जाएगी। एंड रिलेशनशिप की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी भी रिलेशनशिप में कोई ना कोई इमोशन जुड़ा रहता है और जब इमोशन आएंगे तभी वो रिलेशनशिप मतलब एक कनेक्ट बनेगा इसमें। लेकिन जब रिलेशनशिप कोई भी बनती है एनी, चाहे माँ बेटे की हो, फादर सन की हो या फिर भाई भाई की हो, हस्बैंड वाइफ की हो, तो इन सब के बीच में फिर जब हम इमोशनली कनेक्ट हो चुके हैं, अटैच हो चुके हैं, तो बहुत सारी चीजें आने लगती है एक्सपेक्टेशन के तौर पे। ठीक है, कभी कभी हम कुछ सेपरेशन वाली चीजें भी होती है, कभी कभी हम हर्ट हो जाते हैं, कभी हम एंगर वाली सिचुएशन में पहुंच जाते हैं और कभी हम बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। तो ये जो सारी सिचुएशन है इसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, या फिर इसको मैं इस तरीके से पूछूं कि इमोशनल इंटेलिजेंस को हम लाके अपने रिलेशंस को कैसे बेटर कर सकते हैं? करेक्ट, या सो इमोशंस हैव अ ह्यूज रोल टू प्ले. Emotions have a huge role to play in relationships, right? Now,
सारा ये जो जितना भी I think the whole drama that happens in families, right? It is just because we do not know how to control our emotions. Sometimes we can, but most of the times it happens that, if one person is angry, the other person also becomes angry, right? Or you get hurt in the process. So emotions are not handled properly. So your question is कि how do uh, can you be more precise, Gagan? आपने ये पूछा कि relationships में, एक बार repeat करेंगे अपना question? बिल्कुल सिंपल है कि इमोशनल इंटेलिजेंस से हम रिलेशनशिप को कैसे बेटर तरीके से हैंडल कर पाएंगे, जबकि हम जब रिलेशनशिप में आते हैं तो बहुत सारी चीजें आती है, एक्सपेक्टेशन, हर्टिंग, सेपरेशन, सारी चीजें होती है, तो इनको हम इमोशनली इंटेलिजेंट बन के कैसे इसको हैंडल कर सकते हैं? Right. So there is one simple formula that I would like to give it to the audiences also sitting there, and it was Mark Brackett who came up with this formula. तो emotions जब हमारी body में हो रहे होते हैं, like हमको 2 ही 3 पता है, मतलब general जो public होती हम, before you get seriously into emotion and studying emotions, people know broadly these emotions: anger, happiness, and hatred, kuch fear, right? But actually bases the intensity. The emotions can be myriad of emotions can be there. So like for example, when I say that I am happy के बहुत सारे versions है. I can feel very satisfied, I can feel very joyful, I can be full of gratitude. There are multiple emotions. Similarly with anger, there is frustration, there is annoyance, there is horror, there is frustration. बहुत सारी चीजें, बहुत सारे emotions होते हैं, sub emotions of a bigger emotion, right? Or milder or more intense emotions. Now what happens is, in relationships, like you said, that there are expectations, there are own emotions, because and when we do not know how to process our emotions, we definitely cannot process other person's emotions as well, right? So now, how emotional intelligence can help? Once you are aware of your own emotions, you become more curious. You become more curious of other people's emotions. क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है तो क्या चल रहा होगा actually. When this thing is happening, अगर इसको गुस्सा हो रहा है तो इसके beyond क्या होगा? We are not just seeing the गुस्सा, but we are also seeing beyond something which is not said, something just that you can feel, and that feeling comes from, once you are emotionally aware, the feeling of empathy generates, Gagan, right? And when you are empathetic, which means you can be in somebody else's shoe. Empathy is nothing but being in somebody else's shoe and really feeling the way he or she is feeling, right? So I was talking to you about the Mark Brackett's formula which he gave, and he gave a term called ruler, RULER. Okay. Now R is about recognizing your emotion. So any emotion that comes up, we recognize that emotion at that point in time in our head. Don't say it aloud, but really recognize. Okay, गुस्सा आने लग गया, right? अच्छा नहीं लग रहा है. So that recognition. Then U is, you calm down and understand that emotion. What is the cause and the cause of this emotion for me, and what could be the consequences of this emotion if this emotion becomes intense? That is number 2. Right? और ये sequentially follow करने को कहा है Mark Brackett ने. So you first recognize your emotion, then you understand, process it, which means you understand and think about the cause and the consequence or the effect of this emotion अगर ये बढ़ गया तो. Number 3 is label. Labeling the emotion means जब आपको गुस्सा आ रहा है तो label it. Okay, this is angry Preeti talking now. Inside of your head you're saying, जब आपको गुस्सा आया तो आपने कहा, या फिर किसी ने कुछ करा और आपने उसके ऊपर जजमेंट पास करा, तो you immediately begin to label that emotion कि this is not me, but this is my judge Preeti who's talking, कि think वो ऐसे ही करता है, right? When we judge people. So number 3 is labeling the emotion. Then number 4 is RULE. E is expressing. Then once you label the emotion, then you express with regulation, right?
you regulate your emotion. तो तब तक ये क्या है कि जो फॉर्मूला है, आप अगर इसको थोड़ा सा अच्छे से समझो गगन, तो इट इज बाइंग टाइम. जब आप ये सब कर रहे हो अपने हेड में, यू आर एक्चुअली टेकिंग सम टाइम. और हमेशा कहते हैं ना कि गुस्सा जिस टाइम आए और अगर आप उस टाइम थोड़ा सा संभाल लो अपने आप को, दिस इज जस्ट अ वे ऑफ रियली. R is recognizing, U is understanding, L is labeling, E is expressing and regulating, and R is again then responding. Then finally, once you have done and regulated that emotion, उसके बाद आप सोच के रिस्पॉन्ड करो. तो अगर हमको ये फॉर्मूला याद रहे, जब कोई भी डिस्कशन किसी रिलेशनशिप में होता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई ऑब्जेक्शंस होते हैं, राइट, एंड व्हेन वी अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड नॉट in agreement, things are not in agreement, at that point in time, if we begin to see our own emotions first, right, what is happening, गुस्सा आ रहा है या जज कर रही हूं तो क्यों कर रही हूं, what is the cause and effect, understand, follow this ruler thing, and then take time to respond. That would be a very good. So if you can control your emotion, I can bet Gagan, सामने वाले को कितना भी गुस्सा आ रहा है, पर अगर आपने अपने आप को संभाल लिया तो वो गुस्सा बहुत ज्यादा देर तक नहीं कर सकता, right, because he then begins to understand and sees that she can still maintain that calm, right. Similarly for you, अगर आपको सामने वाले का, रिलेशनशिप में हमेशा दो लोग होते हैं, दो या तीन लोग होते हैं, ज्यादा होते हैं, तो आपने ये काम अपने ऊपर करा, सेम काम आप दूसरों के ऊपर भी कर सकते हो. कैसे कि when you are beginning to see, okay, I know that when I say this to my husband, to my son, it upsets that person, right? Now, once you begin to understand that this upsets, why would you want to then say similar things to upset that person, right? So becoming emotionally intelligent is all about understanding people's emotions, becoming sensitive to those emotions, and then using your own judgment, whether this is the good time, whether this is the good place, whether this is the good mindset for the other person, राइट. क्योंकि आप एक ही चीज को, गगन आपने बहुत बार देखा होगा, आप एक चीज को किसी के अच्छे हैप्पी मूड में कहोगे तो बात बिल्कुल फर्क होती है. दैट पर्सन विल टेक इट इन अ वेरी डिफरेंट वे. सिमिलरली इफ दैट पर्सन इज इन अ बैड मूड एंड यू गो एंड टॉक टू हिम अबाउट द सेम थिंग, he will react in a very different way. So emotional intelligence is all about that. You can understand कि सामने वाले का भी mindset mood क्या है, कौन सी feelings चल सकती हैं इस time, will my this thing or this request, will it fly, will it not, will this make him upset, right, all those questions. So you become aware of the other person's emotions, and then use this judgment and this knowledge that you have gained about your own emotions and other person's emotions to then respond at that point in time, right? So that's how emotional intelligence can be used in relationships to make them better. Regarding your question for the expectations is a very different thing, right? It is nothing to do with your emotional intelligence, but definitely what emotional intelligence does is that when people expect things from you, or you expect things from your better half, spouses or children, understanding that my expecting this is not helping the other person, this expectation is only giving me misery, right? Because if it will not be met, क्योंकि ये expectation तो आपकी खुद की है ना, और वो अगर जब मीट नहीं होती है तो आपको दिक्कत होती है. यू फील अपसेट, यू फील सैड, यू फील हर्ट. नाउ द मोमेंट यू अंडरस्टैंड दैट दिस एक्सपेक्टेशन इज नॉट अबाउट एनीबडी एल्स, गुस्सा हमको दूसरों पे नहीं आना चाहिए. दिस एक्सपेक्टेशन इज माय ओन एक्सपेक्टेशन, द कॉज ऑफ मिजरी इज माय ओन इमोशंस. द मोमेंट वी अंडरस्टैंड दैट कि ये जो सारा एक्सपेक्टेशन का गेम है, ये सारा हमारे खुद के इमोशंस का, इट इज नथिंग टू डू विद द अदर पर्सन नॉट बीइंग एबल टू मीट दैट, right? So that awareness itself is so beautiful. It takes you in a very different or takes you on a very different pedestal to be able to think कि ये सब मेरा दिमाग में है, मेरी expectations meet नहीं हो रही हैं, और हमको ये समझ में आ जाए तो things become much better and the relationships become better actually. Excellent, ma'am. Beautifully. Yeah. एक और सिचुएशन को मैं यहाँ पर लेना चाहूंगा मैम. हमारे लाइफ में बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं जिसमें हम बहुत ज्यादा प्रेशर में होते हैं. फॉर एग्जांपल कोई स्कूल स्टूडेंट है या कॉलेज स्टूडेंट है, कोई भी स्टूडेंट है, while he is going for an exam, he is under pressure. कोई
प्रोफेशनल है, उसे कहीं प्रेजेंटेशन देना है, कहीं कोई चीज प्रेजेंट करनी है, तब वो प्रेशर में होता है। कोई स्पीकर है, स्टेज पे लाखों लोगों को एड्रेस करना है, तब वो प्रेशर में होता है। तो ये जो सिचुएशन है, हम हर कोई सोचते हैं कि भाई इस सिचुएशन में थोड़ा सा काम रहना चाहिए, काम रहना चाहिए, लेकिन ऐसे सिचुएशन में हम क्या प्रैक्टिस करें या कैसे प्रैक्टिस करें कि ताकि हम उस सिचुएशन के जो बैड इफेक्ट्स हैं उस पर हम ना जा पाए। Correct. Very, very good question. And especially when you asked about the youth or the young children going under the pressure of exam or professionals going for a presentation, it happens with everybody, Gagan. So very good question. See, as I talked to you about mindfulness some time back, becoming mindful or doing some kind of practices. So each individual is different, Gagan. तो हमारे सबके लिए एक कोई prescriptive methods नहीं हो सकते हैं. I can suggest certain things, but for each one of us, the things could be different, right? So for my son, the relaxation could be music. Right? He loves to listen those songs and उसके साथ में वो presentations बनाता है, उसके साथ में वो math करता है. For me, it is crazy. How are you listening to the song and really working? It doesn't work that way. आप multitasking कैसे कर रहे हो, right? That is my own, the way I was brought up, and it is my own conditioning. But for him, the relaxation is music. So we all should understand what could be the calming things for us, right? तो अगर मैं आपको बताऊं कि meditation is something that can generally, because of the science that I explained to you just now, the sympathetic nervous system, the parasympathetic nerve, it calms our nerves down. So everyday practice of meditation, sitting for just 10 minutes in quiet, for some people they begin their days like that, for some people it could be at that moment. तो जैसे किसी को एग्जाम देना है, जैसे आपने कहा ये प्रेजेंटेशन देना है, तो बहुत सारे टाइम आपने देखा होगा कुछ लोगों को they just sit with themselves with their closed eyes. What they're trying to do is they're trying to center themselves. Center so that the thoughts become absolutely focused, right? So just calming yourself down with this meditation, 5 minutes, 2 minutes, whatever works for you. Just deep breathing and meditating is one technique. The other is you can go out in nature. Right? Go out in nature, take a small stroll, feel the nature, the breeze, the wind, connect with the nature. This is very, very relaxing. The third technique is, again, you have to have a practice of good sleep hygiene. Right? So whenever you have an exam, some people tend to, they're up till 4 o'clock in the morning or 7 baje unko exam dena hai. That's not the way you should be doing, ideally. You need a good sleep hygiene. Good 6-7 hours of sleep is required to be able to calm your brain, be excellently focused, right? Then also for exams ke liye jo ye stress hota hai, anxiety, stress, how you can calm yourself down is, again, as I said, some people can play, go out and play something. It could be very relaxing. Some people play music, some people just dance, move. It could be anything. Some people want to just write poetry. It could be anything. Any expression to your emotions, that stress that you're going through, that anxiety that you're going through, some expression. So emotions are nothing, Gagan, but it is energy in motion, emotion, right? Emotion. So it is energy. क्या होते हैं emotions? That is a psychological state. Emotion is nothing but a psychological state and it is a response to our न्यूरोफिजियोलॉजी. तो जो हमारे बॉडी में हो रहा है, जो हमारे ब्रेन में हो रहा है, उसका जो रिस्पॉन्स है वो एक इमोशन है, वो एक थॉट है, वो एक फीलिंग है, राइट? तो इसको कोई एक्सप्रेशन मिलना जरूरी है. दैट calms you down, that takes off the stress. And these are the couple of techniques. It could be sitting in meditation, it could be going in outside, connecting with the nature, it could be just playing music, writing something, drinking a couple of glasses of some cool breezy drink. Water does wonders. Sometimes when we are dehydrated we get too stressed out, right? That's why they say exam ke time pe aapke paas pani ka bottle zarur hona chahiye, because your brain needs that hydration to work properly. So these are a couple of these techniques. Eating right is very important as well. What you are eating, sometimes just eating a lot of fast food and all that gives you a lot of stress. So
really hogging on the green vegetables, the right fruits, the curd, and all those things that can really nourish your mind, body, and soul. Yeah, so that these are the techniques. वंडरफुल मैम. आई थिंक आपने सारी चीजें तो कवर की है अभी. और सबसे हाँ. जो ब्यूटीफुल जो आज के इस डिस्कशन का मुझे लगा कि जो आपने ये प्रेशर सिचुएशन को जो आपने हैंडल करने का तरीका बताया, कैसे हम इमोशनली इंटेलिजेंट बन सकते हैं, ये रूलर फॉर्मूला जो आपने बताया कि भाई ये एक स्टेप बाय स्टेप अगर हम करते हैं तो ये हमारे हैबिट में आ जाएगा और उससे जो रिलेशनशिप में जितने भी ग्लिचेस हैं इवन हम उसको भी सॉर्ट आउट कर पाएंगे और चीजों को बेहतर तरीके से हम परफॉर्म कर पाएंगे. और बिल्कुल ये भी बोला भी जाता है कि भाई सिर्फ पैसा होने से आपकी लाइफ खुशनुमा नहीं हो सकती, आपके रिलेशनशिप, आपके संबंध भी बहुत अच्छे होने चाहिए. वो चाहे संबंध आपके फैमिली से हो, चाहे नेचर से हो, चाहे गॉड से हो, चाहे आपके कुलीग से हो. तो इसके लिए जो इमोशनल इंटेलिजेंस है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. मुझे तो बहुत थोड़ा सा ही नॉलेज था, लेकिन आज आपसे सुनने के बाद में मुझे काफी क्लैरिटी आई है. और कैसे एक स्टेप्स जो आपने दिए हैं, अब इस स्टेप्स को फॉलो करके हम भी अपनी लाइफ में जो रिलेशंस में जो कोई प्रॉब्लम्स है उसको दूर कर पाएंगे. और मैम कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स अगर आप देना चाहे, हम सेशन को भी यहाँ पर बस एंड करने वाले हैं. सम कंक्लूडिंग रिमार्क्स फ्रॉम यू. Right. I think out of all the things that I said, Gagan, one of the things that I would like to, which has changed my life big time, is operating from the space of gratitude. Right? इतना कुछ हो रहा है, अभी कोविड हुआ, लोगों के इतने सारे लॉसेस, पर्सनल लॉसेस, राइट, कंट्री लेवल्स पे, कॉन्टिनेंट लेवल पे कितना कुछ हो रहा है, राइट, यूक्रेन, रशिया, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर हैपनिंग. वी डोंट नो व्हाट वी आर, विच काइंड ऑफ वर्ल्ड वी आर हेडिंग इनटू, राइट. तो बहुत कुछ है उसमें. इंस्टेड ऑफ रियली क्रिबिंग, ये चीज नहीं है, ये पैसा नहीं है, लोग हमारे पास अच्छे नहीं है, ऑल ऑफ दैट, ये तो हम बहुत सारे टाइम करते हैं. बट हाउ मेनी टाइम्स इन द डे do we sit with ourselves and really thank for what we have? ये जो रिलेशनशिप की आपने बात कही, इमोशनल इंटेलिजेंस टुगेदर, राइट, उसमें सबसे बड़ी चीज मेरे ख्याल से क्या होती है कि जो हमारे पास है, जो हम बदल नहीं सकते, राइट, द पेरेंट्स दैट वी हैव कम फ्रॉम, द सिस्टर्स, ब्रदर्स दैट वी लिव विद, एंड द स्पाउसेस दैट हैव कम इनटू आवर लाइव्स, देन द चिल्ड्रन, वी कांट चेंज देम, राइट, जो है वो है, राइट. उसमें हम अपनी सबसे खराब बात यही है एक्चुअली कि सब हम लोग भी ट्राई टू बी गुड विद अदर पीपल. प्रोफेशनली हमको जाएंगे तो वी हैव टू लिसन टू आवर बॉस, वी हैव टू बी नाइस टू आवर peers, we do all of that and use some kind of emotional intelligence there. But the people who are closest to us, who mean the world to us, whether it is our spouse, our children, our in-laws, our parents, that's the place we take them for maximum granted. And we don't thank them enough for small things, right? We're not bothered कि किसी ने कुछ किया तो how many times do we actually go and say thank you to the people who are bringing money in the house, who are really working for you, right? The mothers who are working, the fathers who are bringing the money, the children who are giving you very different kind of joy, some way or the other. तंग भी करते हैं, but at the same time, how many times do we really sit in the space of gratitude and be thankful for what we have and really so that is a big one that I would like to conclude the session with, that on a daily basis, out of all the practices that I've told you, meditation, mindfulness, all of those, if we can also include gratitude in our practice, chahe subah उठ के कर लें कुछ लोग, just be thankful for everything that you can think of. It's a 5-minute practice. Or writing 5 things at the end of the day. Make a journal and write just random 5 things कि आज मुझे ये 5 चीजों के लिए, अपने बेटे के लिए, मे बी अब किसी ने मेरी मेड के लिए, my maid who came and served me the tea when my head was hurting, can I be thankful for that? Should I be grateful for that person? If we can write those 5 things every single day, just 5 things, and teach our kids to be grateful for everything, right? For it is also one of the ways to become emotionally intelligent. It plays a big role. Gratitude plays a big role in emotional intelligence. So if we learn to recognize what we have and be thankful for that, we will be more sensitive to other people's
people and emotions of other people also. So I think that is what, and it has changed. As I said, it has changed my life like crazy. I can be thankful to anybody, a stranger walking on the street. If that person makes me smile, I will go and say thank you. You did that to me. I say thanks to my live-in maid servant maybe 5 times in the day. That's how it makes with the thought. The thought is that how can you address to other person's emotional needs, right? People want to be recognized. People want to be heard, listened to, and then loved. तो अगर आपने उनको जाके थैंक यू कह दिया तो उनको उनके इमोशंस वैलिडेट होते हैं, right? So I would like to end the session here, Gagan, that each one of us should be, keeping this gratitude as a ritual in our day. Thank you so much, ma'am. I would like to express my gratitude on behalf of complete Bluue Pin team for sparing time with us from your busy schedule. So thank you so much, everyone, for joining us on Skillful Saturday today. And we have been talking with Madam Preeti Khare, who is an internationally certified life transformation and relationship coach. And thank you so much. And be connected with us. We'll be having another episode of Skillful Saturday next Saturday. Thank you so much. Thank you so much, Gagan, for having me on the show. It was lovely talking to you. Thank you. Bye-bye.